Hi guys, my name is Saim Sadiq. I just had a lovely conversation about Joyland with Amna. And if you want to know more about it, please like and subscribe to Something Hot. And Joyland is going to be in Pakistani theaters in November. So go and watch that. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट. दिस इज़ हॉट टॉक. मेरे आज के मेहमान हैं द एक्सट्रीमली टैलेंटेड, द वेरी ब्रेव एंड द वेरी सेंसिटिव स्टोरी टेलर Saim Sadiq. Saim has come through Venice Film Festival and Cannes Film Festival and now Melbourne. He's here with us today. Saim, वालेकुम अस्सलाम. अब जेट लैग कितना है? नहीं है यार, ज्यादा नहीं है. मेलबर्न का सिर्फ 5 घंटे का. ये बड़ा अजीब सी बात है. तो बहुत दूर है, हाँ. लेकिन नहीं है. But how does it feel? I mean, you kind of conquered the film festival circuit for Pakistan, at least. Yeah. I mean, how fantastic is it? Both films and both hits. Good luck. You think it's luck? There is some कुछ थोड़ी बहुत तो आपको मानना पड़ता है. I think वरना आप बिल्कुल ही अपने आप को बहुत तुरुम खान समझना शुरू हो जाएंगे कि बहुत जल्दी मैंने बड़ा कमाल किया है. लेकिन I think of course you work hard और आपकी मेहनत होती है और आपकी एक लगन होती है और आपकी एक इंटेंट होती है, which does matter in filmmaking, I think especially. But somehow being a bit lucky does come into play, I think. Do you also think it's a lot of sincerity in storytelling, you know? Let's just dip into your background a little bit first. You're a LUMS graduate. I am a LUMS graduate. And then you went to Columbia. बिल्कुल. And then आपने film बनाना सीखा वहाँ से. बिल्कुल. और फिर आपकी जो graduate film थी वो डार्लिंग थी. जी. और जो गई वेनिस फिल्म फेस्टिवल और वहाँ पे एक तहलका मच गया. एटलीस्ट हमने सुना और हमने कहा वाओ यार, कोई पाकिस्तानी फिल्म मेकर. And this was the first Pakistani feature? Short film, हाँ. Short film. Yeah. To make it to an international circuit in this way, at least. And it picked up awards there. Yeah. First of all, how was that? I mean, you were young, you're still young. हमारी पहली तभी बात हुई थी. हाँ, हमारी इसी तरह बात हुई थी. डार्लिंग के टाइम पे बात हुई थी, मुझे भी याद आया. हाँ, आपने कहा था मैंने देखी है, आपको लिंक भेजा था. It was amazing. उस वक्त बल्कि और शायद एक तरह से स्पेशल था in a different way because स्टूडेंट फिल्म थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं थी किसी की कि यू नो उसके ऊपर एक प्रेशर रिस्क फैक्टर भी जीरो था. नहीं था. बच्चे आपने बनाई एक फिल्म, थीसिस फिल्म है, आप पास हो गए, दैट्स good enough. But I felt कि उस फिल्म में कोई एक स्पेशल बात थी या ये जो पंजाबी थिएटर वर्ल्ड था और उसकी जो कहानी थी उसमें कोई एक स्पेशल बात थी. I felt always in the making of the film and afterwards also कि मुझे लगता था कि हाँ यार चलो ट्राई करते हैं, let's submit it. थोड़े पैसे लगेंगे तो कोई बात नहीं. So हमने बहुत कोल्डली सबमिट कराई थी. एक्चुअली वेनिस सबमिट कराने पे तो मैं खुद अगेंस्ट था बिकॉज मेरी जो प्रोड्यूसर थी आल्सो फ्रॉम कराची, महक. महक ने बोला कि मैं कराती हूँ. मैंने कहा महक ये 70 यूरो मैं नहीं दूंगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि वो जो जितना बड़ा फेस्टिवल होता है उसकी सबमिशन फीस उतनी ज्यादा होती है. अच्छा. तो मैंने कहा 70 यूरो नहीं मैं दूंगा, इतने नहीं है मेरे पास. वो 20 यूरो वाले ढूंढो फेस्टिवल, वहां भेजते हैं. तो उसने कहा नहीं मैं भेजती हूँ, मैं करूंगी. करो यार, बिस्मिल्लाह करो. एंड आल्सो बिकॉज जितनी मैंने वेनिस की फिल्में देखी हुई थी मुझे लगा था यार ये तो बहुत ज्यादा आर्ट्सी हैं. मेरी फिल्म उतनी आर्ट्सी नहीं है. You felt that way. I felt that was my reading. मेरी फिल्म तो बहुत entertaining फिल्म है. But it somehow ended up getting selected, ended up winning. So which again, you never know. Yeah. You don't know what's going to click with the audience, with the jury. कैसे perceive किया जाता है. How do you think it was perceived? Obviously well, but why do you think it clicked with the foreign audience? I think just a freshness, which was जो एक चीज यहाँ के लोगों के लिए भी फ्रेश है बिकॉज वो उन्होंने कभी एक फिल्म नहीं देखी विद 2 कैरेक्टर्स जिनमें से एक ट्रांस गर्ल है और वो एक फिल्म है जो is set in the Punjabi Mujra culture theatre. You don't think of a film that could be entirely based there. No. But again, the novelty of that film was as much for people abroad. Yeah. Because Pakistani का जो narrative associate होता है वो या तो ये terrorist हैं या ये वो मुसलमान हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं या जिनको एक सेव करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है. Our film was just a very entertaining कि this is a theatre world. ये भी है एक parallel world and we are very happy living on our own and we have our own little issues and we are solving them ourselves. Yeah. So it was just I think
Pakistan is such a hotbed for stories. We have so many stories. हमारी इतनी कहानियाँ. Yeah, but सड़क पे Simon, किसी से people रुक are के बात very कर लें. afraid of telling the real stories. I think I don't know why. मुझे नहीं इसका. कुछ vulnerability है ना असल stories बनाने में. You become vulnerable. I guess. But also I think हमें शायद एक आधी कोई चीज़ फॉर्मूला हमारा चल जाता है तो फिर हमें लगता है कि यही चलेगा. Like एक कोई ड्रामा हिट हो जाएगा या एक कोई फिल्म हिट हो जाएगी तो अब यही चलता है, यही एक फॉर्मूला है, जो कि हमारा मसला नहीं है. सिर्फ आई थिंक इंडिया में भी यही होता है बहुत ज्यादा. वो एक उनकी हिट फिल्म होती है तो कहते हैं अब सब यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा. तो और उस थिंकिंग के अंदर आई थिंक we forget कि I think storytelling just has to come from a personal space. And doesn't mean कि वो मेरी अपनी कहानी होगी, आपकी कहानी होगी. Right. But आपका अपना personal interest क्या है, कौन सी कहानी बताने में as a director and writer, and that's the story you should tell. So both your stories, Darling and Joyland, both tap into the Lahore Mujra culture. ये क्यों? मुझे बहुत fascinate मतलब अब तो निकल गई है मेरे अंदर से वो एक निकल गई है था. बस हो गई कि अभी तीसरी भी आएगी. उसकी थर्ड पार्ट नहीं है. ठीक है. लेकिन आई थिंक बट इट्स जस्ट सो फैसिनेटिंग यार बिकॉज आई थिंक वही कि एक व्हेन यू थिंक ऑफ पाकिस्तान इवन एज पाकिस्तानीज हमें भी हमेशा एक थोड़े रोती धोती सेटिंग और रोती धोती या थोड़ी एक ऑब्वियसली ड्रामेटिक सेटिंग ढूंढते हैं. मुझे ये सेटिंग बहुत अच्छी लगी थी. अगेन इट्स नॉट कि ये फिल्म जॉयलैंड पर्टिकुलरली इज नॉट अबाउट द थिएटर वर्ल्ड. इट्स जस्ट सेट इन द थिएटर वर्ल्ड एंड दैट गिव्स इट सम कैरेक्टर. It's a really interesting backdrop. Yeah, the backdrop is really interesting because I think it's a place where people come for voyeurism. Totally. You know कि बहुत सारे बंदे आएंगे, एक आंटी स्टेज पे होंगी, ठीक है ना, वो पूरे कपड़े पहन के, लेकिन थोड़े से नसीबुल लाल के कोई थी वो बड़ी वैसे टाइट थी बड़ी. वो आंटी जो थी ना लाल कपड़ों वाली, अमेजिंग. जी अमेजिंग. वो उनका कॉस्ट्यूम किसने बनाया था मैं जानना चाहूंगी. जोया हसन हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी. अमेजिंग जॉब. वेल डन जोया. या सो मुझे वो सेटिंग और उसकी जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि यही लोग हैं जो बाहर जाके अल्लाह अल्लाह करेंगे, यही वो हजार मर्द हैं जो रोज मंडे टू संडे जो है ये सीटें भरते हैं, और बाहर जाके यही वो लोग हैं जो शायद इंस्टाग्राम पे आपको आके ट्रोल करेंगे कि आपने दुपट्टा नहीं पहना हुआ या आपने नहीं किया हुआ, लेकिन उनकी पसंद भी वही है. यू नो सो दैट डुअलिटी आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. एक दोगलाबंदी में उसको कहूंगा. आई थिंक एवरीबody has like a private self and a public self. You don't call it hypocrisy? It is on some level. Yeah. Of course. We're being nice about it today. Today we'll be nice about it. Yeah. But if you look at it from a filmmaker's perspective, I think filmmaker का काम होता है वो जज ना करे या कोशिश करे जितना मर्जी कि वो जज ना करे. Obviously मेरी अपनी एक values हैं, मैं liberal हूँ, but मैं उन चीज़ों को अपनी फिल्म के अंदर बहुत obviously characters को जज करने के लिए यूज नहीं करना पसंद करता. मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई कहानी बता रहा हूँ और उसमें कोई ऐसा किरदार है जो मेरे वैल्यू सिस्टम से फर्क चीज़ें करता है तो मैं उसको समझने की कोशिश करूँ. जिस तरह से फॉर एग्जांपल जॉयलैंड आप लोगों ने देखी नहीं है लेकिन आपने देखी है, उसमें जो फादर्स कैरेक्टर, सो एक हद तक अगर आप एक अबू जी दिखा रहे हैं जो थोड़े पेट्रियार्कल हैं, जो थोड़े सख्त हैं, मतलब बहुत पेट्रियार्कल हैं, बहुत सख्त हैं, बट ज़रूरी है एक एज अ स्टोरी टेलर कि आप अपने आप को थोड़ा कोशिश करें, चैलेंज करें कि यार इनकी वल्नरेबिलिटी क्या है, कि ये खुद भी शायद अपने ही मॉरल्स की वजह से शायद थोड़ा सफर करते हैं, ज्यादा बहुत सफर करते हैं और बोल भी नहीं पाते, ठीक है ना. तो वो that I think that's why I tend to not call it hypocritical. I tend to call it like this is how we live. Everybody has a public and a private self, right? Particularly the characters in the film, and the setting was something that matched that. Yeah. So what I loved about the film was that every character interested you. There was not a single character that you were not connected to immediately. Thank you. And the characters were vulnerable, and yet they were strong. They hadn't resigned to what was written in the cards for them, you know. And especially Alina, I mean, what a performance. Fantastic. And, you know, you brought her in with Darlings, usme bhi Joyland mein dobara, and how did you find her? I think she's much better in Joyland. Now that she has Joyland हमने कर लिया तो मैं उसको बता दूं कि तुमने डार्लिंग में बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया था. But उसकी गलती नहीं थी because we found her 5 दिन पहले before the shoot of Darling. Really? Yeah, Darling she was not supposed to be in the film. हम जिन एक्टर ने करनी थी ये Darling उनको लेके गए थे अलीना के घर because Alina was a dancer. Right. And the character was of a dancer. तो हम अलीना को उसको लेके गए थे कि तुम अलीना को देखो वो डांस करेगी, you just have to mimic her and copy her and learn from her for research. But जब वो डांस
करके उसको दिखा रही थी और उसको थोड़ी उसकी लिंगो अपनी बता रही थी, तो हमने कहा यार ये जो उसको बता रही है ना, ये कभी, वो बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन वो कर नहीं सकता, वी हैव टू गेट हर। राइट। वो थोड़ी रॉ होगी, वो थोड़ी पॉलिश नहीं होगी, उसको शायद कैरेक्टर के नुआंसेस उस तरह से ना आए जो रिटन Right. कैरेक्टर है, Yeah. बट जो वो ऑथेंटिसिटी वो लेकर आ सकती है, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द फिल्म एंड जस्ट मेक इट अ मोर ऑनेस्ट फिल्म। सो Yeah. वी हैड टू डू दैट वेरी अनकंफर्टेबल थिंग ऑफ सेइंग बाय टू एन एक्टर एंड गेटिंग हर। And you had a male 5 actor days. for that character. Yes, we had a male actor at that Right. point in time. So I'm so glad that you actually got yeah, and मैं तो बल्कि बहुत ओपनली बताता हूँ कि ये जो बहुत आजकल कॉन्वर्सेशन होती है अप्रोप्रिएट कास्टिंग के ऊपर एटसेट्रा, और लोग हमेशा कहते हैं, मतलब उनको लगता है कि नहीं हम मेल और फीमेल एक्टर को ही एक ट्रांस कैरेक्टर के लिए रखेंगे, या कोई भी अगर आप माइनॉरिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम एक नॉर्मल मेल और फीमेल या एक गोरे बंदे को लेके उसको काला कर देंगे एटसेट्रा। बट द ट्रूथ इज कि आप जब अगर ऑथेंटिकली कास्ट करेंगे, आप उनके साथ कोई चैरिटी नहीं कर रहे, आप अपना फायदा कर रहे हैं। Yeah. माई फिल्म बेनिफिटेड because I got Alina to do this part. Yes, Alina का yes. फायदा हुआ होगा। But Alina delivered. Yes, she delivered. If but you have a bad actor coming in, bad actor coming in, and जो वो कर सकती है वो कोई एक्टर आके वो नहीं कर nuances सकता, कोई pick up शायद नहीं कर सकता, सकेगा। because वो Yeah. inherently वो लेकर आ रही है, वो सोच भी नहीं रही है कि वो क्या कर रही है। Exactly. That's just her She's way being of being. herself. Yeah, So absolutely. you actually get to work on the character, not the gender of the character. You don't have to play the gender. Yeah. You just have to play the character. But that requires people to then go beyond gender. Exactly. So that's the thing. Yeah. First, we have to go beyond the gender. Yeah. And then you get into the character. हम तो gender से आगे नहीं जाते. Yeah, because अगर कोई ट्रांस है, कैरेक्टर आता भी है तो वो यही होता है कि ये ट्रांस क्या कैरेक्टर, ये ट्रांस है. हाँ. But that's not a character. Yeah. A trans girl can be sad, can be happy, can be vulnerable, No, can be but brave. for us it's like trans. Yeah. That's it. ये Yeah. कैरेक्टर है. हाँ. वो कि डॉक्टर का रोल कर रहे हैं आप इसमें. नहीं, exactly. You know? So I think again, hopefully. That's quite sad actually. Yeah, but it exists for not just for trans people. I've heard people say that about all characters. People talk about characters in our country and largely in mainstream कि ये किसका कैरेक्टर है, वो कि एक डॉक्टर बहू है, मतलब पर डॉक्टर बहू मेरी फैमिली में 4 हैं, तो वो बहुत अलग अलग हैं चारों की चारों औरतें, तो वो उनमें से कौन सी वाली है, तो you know that is really hopefully changing now. I hope. I don't know. I don't see it changing much. I think we're regressing a bit, but with films like Joyland, and I hope it gets a local release. Inshallah. What's happening on those lines? So we are gearing up for, I won't be able to say date yet because that we'll have to wait for a press release, but November inshallah. November this year. We are in talks with the distributor and planning the release. Yeah, but definitely, most definitely we're going to release. I don't think there's a, yeah. Inshallah. I hope so. I hope so. I think it's a film that people need to watch. It's a film that people need to watch and walk out with a little more tolerance than what they walked in with. Hopefully. Yeah. Hopefully, absolutely. So it is a very sensitive film, and there are so many different ensemble. It's an ensemble cast. Yeah. How did you pick the cast? I mean, you've got some of the biggest names and. Yeah, some of the biggest names and some of the newest names. Yeah, so that's absolutely quite. It just happened that if you would think of this casting theoretically, it doesn't make any sense. None at all. कि अली जुनेद जो हैं, साथ में अलीना और साथ में सानिया सईद भी होंगी और सरवत जी और साथ में रास्ती भी और सरवत भी lower middle class, मतलब 4 बच्चों की माँ जो and will pull it off. Yeah. You know, like it just happened. I think we really went character by character. But at the same time, I was aware that as a family, it should make sense. It should look believable enough as a family. तो सबसे मुश्किल I think हैदर को ढूंढना था. Because I knew कि कोई हमने known actors में कभी try नहीं किया because I didn't think anybody was the right fit. दूसरा जो नए actors हमने करना शुरू किए, that was quite a process. I think we auditioned some 600 plus boys. Oh my God. Yeah. Okay. And no hope. Like no hope. No, not at all. I think one probably had some hope. तो उसने स्क्रिप्ट पढ़ के खुद ही मना कर दिया. उसने कहा कि एक समझ था कि अच्छा हाँ we can work something out, you know, कि this is an interesting face. और तो उन्होंने पढ़ के कहा कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं तो हीरो बनना है. तो मैंने कहा चलें फिर आप. Thank you. And then Ali was frankly the last name on our list. We didn't have any other names. So मैं अली को मजाक में कहता हूँ कि अली तुम आखिरी थे. It's not because you're good. It's just there was no. We were desperate. You were desperate. But what a find. What a find. Ali was recommended by a bunch of people in Karachi. Fawad Khan जो Napa वाले हैं. Usama Tahir. Was a TV actor. Was a lovely guy.
And then I met him, and then I think I met him half an hour later. I was like, he's going to do it. Like he's the right fit. Yeah, he for did the a very film. fine job. He's He did so a good. fine job. Yeah, I think he's Especially amazing. the way he gets into dance. You know, and that one scene on the terrace when she tells everybody else, "Tum log jao," and then it was like okay, and you could tell that he's nervous and he's a bit self-conscious, but वो कर जाता करता भी jerky तरीके से ही है. It's not like he's a smooth. hero, No, not at all, heroic, not but at all. yeah, like again, somebody who is interested in acting would understand that there is so much to do with a character So like much this. to do with the characters. Even though it was not just कि ये कोई hero type character नहीं था जो climax में 10 लोगों को घूसे मारेगा और गाना में एक गाने में से डांस तो अच्छा ही कर लेता है end पे आके. But I just felt कि otherwise also it was a brave choice for him to do it, because this is the least, if you look at the script, this is the character that speaks the least. Yeah. वो जो Bechdel टेस्ट है, अगर वो उल्टा होता और मेल्स का होता तो हम फेल हो जाते, because ये कैरेक्टर बिल्कुल नहीं बोलता. It's all the girls who are talking around him. But he's in almost every scene. But he's in almost every scene, and he has to do a lot without saying a lot. Which is actually tougher. Very, very tough. Yeah. So, and I think he's just like probably the biggest find for the film was this guy. And I'm very excited for his future. Was it even a question for you that you wanted to cast Alina again? No. Or you were like, bas yahi karna hai. It was a two-way thing. So I started involving her after Darling writing process के अंदर. तो मैं उसको कॉल करता था बहुत ज़्यादा. वो मेरे घर आती थी, हम बैठते थे, मैं उससे सवाल जवाब करता था कि अच्छा ये कैसे बोलोगी, अगर ये सिचुएशन होगी तो तुम क्या करोगी, ये होगी तो तुम क्या करोगी. Not because उसकी real life is the character, it's very different. अलीना से ज़्यादा sweet और docile बच्ची इस दुनिया में नहीं है. And Biba is not docile at all. Thank God, no. Yeah, so again, but I had to still figure out कि एक क्या चीज़ believably हो सकती है उसकी दुनिया में, और दूसरी चीज़ ये what can she pull off? Yeah. Because she's not a trained actor. Right. Well, now I would say she is, perhaps because she got the experience now. Yeah, now she has the experience, and अगर आप अलीना से मिलेंगी, जो कि I hope soon absolutely. enough, you'll realize how far she is from the character, and then you'll respect her more as an actor, because you're like, this is all acting. It's not like you're just playing yourself. Right. So no, there was Although no question. शायद देख के लोग कहें कि अच्छा अब सारे ट्रांस ऐसे ही होते हैं. नहीं, अलीना तो बिल्कुल ऐसी नहीं है. बाकी ट्रांस का मुझे नहीं पता, लेकिन अलीना तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है. What do you say about the conversation around trans rights these days? I mean, it's a huge conversation that's happening mostly on Twitter, unfortunately, but it is a conversation, especially with Mehrab Moizab. Abhi jo recently, you must have followed the whole controversy and everything. Do you think that there's hope for trans people in Pakistan, where the conversation is so conservative and so sort of tight-lipped? I mean, hope है because Mehrab जैसे लोग हैं हमारे पास. Yeah, but they're up against the odds. Yes, but चुप नहीं हो रहे ना फिर भी. ये बहुत अच्छी बात है. मेरा ख्याल है कि अगर आप, that's all it takes, I think, at some point, and we must applaud उनकी जुर्रत कि वो चुप नहीं हो रहे. Because चुप होना बहुत आसान है. When you're literally, honestly, आपकी जिंदगी थोड़ी खतरे में होती है इस तरह की बातें करके. आपने दायरा दूध लेने के लिए घर से निकलना है, आपको कोई भी चलते फिरते कुछ भी कर सकता है. बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि हमारे माशरे में ऐसा हुआ नहीं है या होता नहीं है. And you can't even be a closeted trans because you're evidently trans. You're visible. And why should you be closeted also? वो तो why should you be anything? But आप अपनी safety के लिए अगर आप identity. But that makes me respect. Not that I would respect anybody जो कि थोड़ा ज़्यादा careful हो इस बारे में. I would respect them less, but it's very admirable for me. Like, I don't have the bravery of like a Mehrab. I don't have it. But you had your own kind of bravery, Saim. You made a film. Yeah, that was not a safe film to make. No, it's not. I agree. And that's how I sleep at night. Because by telling myself कि चलो हम ज़्यादा नहीं, हम कुछ अपने तरीके से, मेरा ये इंटरेस्ट है, या मुझे लगता है मेरा ये टैलेंट है, या मेरा ये कॉलिंग है टू मेक अ फिल्म और टू टेल स्टोरीज, तो मैं उस तरह से उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो मैं शायद यहाँ बैठ के ओपनली नहीं कर सकता. So that my film can do the talking for me. But it's great that there are people who are doing the talking for themselves also. And they will increase. Mehrab is not going to be the only one soon enough, I feel. I hope. I usually tend to think a bit more positively. Human rights need to improve in this country, for sure. Absolutely. For sure. And tolerance. Just generally, अगर आप सोचें कि वो एक
ख्वाजा सरा इंसान जिंदा रह के और अपनी बात अपने चैनल पे करके, जी जिसको आप अनफॉलो कर सकते हैं, उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, जी आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा है? जी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। नथिंग आपकी जिंदगी पे 0% भी फर्क पड़ा है? नहीं नहीं पड़ा। लेकिन जब आप उनके अगेंस्ट जाते हैं, क्या उनकी जिंदगी पे खतरा है, उनको फर्क बिल्कुल पड़ता है है? पड़ता है। पड़ता है That's I think it's a very basic logical चीज। इसके अंदर तो मतलब आप ह्यूमन राइट्स में आपका बिलीफ है नहीं है, that's a separate question. Why नहीं would अब you ह्यूमन just राइट्स में try तो to हर एक मतलब का बेसिक ह्यूमन राइट हक तो होना चाहिए ना कि उसको या जिंदा रहने का हक है कि नहीं हाँ है? अगर आप सब मान रहे हैं कि है तो रहने दें फिर जिंदा उसको, and don't create a scenario where people's lives are in danger yeah or you contribute to that danger. Yeah, so your entire film, Joyland especially, is all about, and you've said this in interviews as well, it's all about creating empathy for these characters. And every character, which is why it's so great that the viewer connects with each character. Yeah, how did you come up with the story? Because were you tapping into something from your... And people haven't watched it, of course, but as briefly as you can, I'd like you to tell them a little bit about the story. सो जॉयलैंड की कहानी के बारे में बहुत लोगों ने आई थिंक इधर उधर बातचीत हाँ की है, सो की देयर इज अ है लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि बिल्कुल ये ख्वाजा सरा के बारे में इसीलिए मैं कहानी चाहती है। हूँ कि आप जरा इट्स सा अ फैमिली ड्रामा। हाँ आई थिंक इट्स द वो जॉनरा है जो हमने सबसे ज्यादा देखा है जो आप पाकिस्तान के टेलीविजन पे अंदर, रोज देखते जो हैं टेलीविजन पे रोज देखते हैं। हाँ मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है इस फिल्म की कि एक्चुअली सरफेस वैल्यू पे ये वो फिल्म है जो आप शायद 10 दफा देख चुके हैं पहले। ऑन सरफेस वैल्यू हाँ इट्स अबाउट अ गाय हु इज मैरिड, जो एक घर का छोटा बेटा है। हाँ उसके घर की कुछ पॉलिटिक्स है, उसके अब्बू से थोड़ी उस तरह से नहीं बनती जिस तरह से वो चाहता है। एक बड़ा भाई है जो कि who's doing a bit well for himself comparatively speaking. इनकी बीवी है जो जो कि कि बेटा पैदा करने की कोशिश जो कर बेटा रही पैदा करने की कोशिश कर रही है पूरी फैमिली मिलके कि बस हाँ क्योंकि बड़े भाई की 3 बेटियां हैं और घर में कोई बेटा नहीं है हाँ थर्ड जनरेशन में। और कहानी हैदर की है जो कि छोटा बेटा है जिसको फाइनली एक जॉब मिलती है। वो काफ़ी टाइम से वो बेरोजगार हैं, लेकिन वो जॉब होती है एज अ बैकग्राउंड डांसर इन अ थिएटर, इन मुजरा थिएटर। मुजरा थिएटर और उनके जो बैकग्राउंड में वो हैं और आगे जो हैं वो हैं अलीना, जो कि जिनके कैरेक्टर का नाम है बीबा, जो कि एक ट्रांस गर्ल हैं। हाँ तो शिट ट्रांस गर्ल सेंसेशन कंट्रोवर्सी हाँ बस यहीं से शुरू यही होती है। है आई हाँ थिंक इससे इसी मतलब इतने बेसिक से आइडिया के ऊपर ये फिल्म बनी है। इट्स नॉट अ वेरी प्लॉट हैवी फिल्म एंड आई थिंक इट जस्ट टॉक्स अबाउट Heather, Biba, Mumtaz, his wife, Nuchi, the elder sister-in-law, the father, a neighbor lady, ये सब किरदार जो इस फिल्म में हैं और जो हमारे इर्द गिर्द हैं आई थिंक बिल्कुल ये उनकी सोच, उनकी ज़िंदगी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स की कहानी है जो कि आपको किसी तरह से भी लेक्चर नहीं करेगी, जो आपको कोई एजेंडा पुश नहीं करेगी, नहीं प्रीच नहीं जो करेंगे प्रीच नहीं करेगी। आई थिंक जो पाकिस्तान का कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इमेज दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है एक कहानी, एक रियलिस्टिक इमेज। आई थिंक like 2/3 of the film is quite uplifting and fun to watch, I would मेरे say. ख्याल में actually it does a service because each of your characters is actually very strong It's strong, and if you look at it, and they're they're all good right people wing. they're good people They're good people and they're all right wing people. yeah they're all This is a right right wing totally conservative family है totally जो कि बीच में नमाज पढ़ने वाली फैमिली है, थोड़ा दीन ईमान बिल्कुल रखने वाली फैमिली है। तो ये मुझे जो एक बहुत बात एक्साइट करती है कि इंशाल्लाह जब ये फिल्म रिलीज होगी, बहुत सारे लोग जो इसको देखेंगे इस फिल्म को, उनको शायद पहली दफा अपना आप एक बड़े पर्दे पे रिफ्लेक्ट हुआ दिखेगा, जो कि nothing against the big Yeah. sort of the usual films that we come up with, but उसमें again they're aspirational films in a certain way जो आपको नहीं नजर आता। So I think मेरे और आप जैसे और नॉर्मल जो पाकिस्तान की आवाम है, उनको अपना आप देखने को नहीं मिलता, टीवी पे भी नहीं मिलता मोस्टली, बिकॉज वो भी एक बहुत ड्रामेटिक, एक ओवर ड्रामेटाइज करके उसको दिखाया जाता है। और फिल्म्स में तो उससे भी ज्यादा आई थिंक ग्लैमराइज कर दिया जाता है, व्हाइट वॉश कर दिया जाता है। आई थिंक हमारी अपनी जिंदगियां आर इंटरेस्टिंग इनफ एंड ग्लैमरस इनफ, लाइक द थिएटर विल टेल अस कि वो उसके ऊपर भी फिल्म बनाई जा सकती है और वो एक कहानी इंटरेस्टिंग इनफ, एंटरटेनिंग इनफ हो सकती है। और एंटरटेनिंग होने का मतलब ये नहीं कि आप स्टूपिड भी हो। Trying to because no, you wanted to say it, but it's it's true. You don't I have, think absolutely. It's the perception is that entertaining means being stupid. Yeah, it's not true. It's not true. No. So I found Joyland extremely entertaining. Thank it was unput downable. I couldn't stop. And what I loved was that it wasn't in your face. There are many things I loved. Ek to I loved the fact that all the characters were actually good people. They were good people with flaws. Yeah.
They had flaws, and that's what made them human, and that's what made them relatable. But they were basically good people, decent human beings. एक तो ये बड़ी अच्छी बात थी. दूसरी बात थी, of course, the way you've shot it, and you've allowed there to be a visual effect, and then you've allowed there to be silence. There's a lot of silence in the film as well, where I feel that जो देखने वाला है उसको एक वक्त मिलता है absorb करके सोचने के लिए कि अच्छा ये क्या हुआ है. तो ये was this like deliberate? I think The audio visual language of the film is kind of. It was, I think, I wouldn't say कि film के अंदर एक curation थी as a director कि इतनी silence versus इतना वो होना चाहिए. I don't know if that's how my brain works, but there was an attempt at making sure कि ये सब लोग आपको असर लगे, ये interesting enough लगे कि आपका दिल करे कि इनको हमने follow करना है या हमें पता करना है कि इनकी जिंदगी में और क्या होता है, and that इनकी एक inherent dignity है इन सब के अंदर जो कि हम retain करें as characters. Absolutely. You know, doesn't matter कि उनके क्या beliefs हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, right wing, they're left wing, it doesn't matter. In fact, the film doesn't even sort of label them as right or left, and the film doesn't label anyone. No, absolutely. You know, so I think in that sense, and I like movies जो थोड़ा आपको absorb करने का time देती हैं. I think आजकल again with TikTok and Reels and Instagram, everything, हमें again ये लगना शुरू हो गया कि फिल्मों का भी यही काम है कि वो हर चीज बस जल्दी के ऊपर जल्दी कुछ कर दें, आपका हो ही ना, कि नहीं होना जल्दी. और हमने assume किया कि लोगों का नहीं है. तो I would like to believe कि है, क्योंकि मैंने एक 1200 सीटर थिएटर के अंदर बैठ के 2-3 बार ये फिल्म देखी है, कान में, मेलबर्न में, Sydney. I wasn't there, but it was playing there, and I heard. So, and people stay. And I can hear reactions when things happen, you know, and I can hear pin drop silence when the film is very quiet. तो जब अगर फिल्म खामोश है और लोग भी खामोश हैं, 1200 लोग, तो उसका मतलब ये है कि हाँ, इस तरह भी कहानी बताई जा सकती है. जरूरी नहीं है कि ये सही तरीका है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से कोशिश करें तो बताई जा सकती है. आई थिंक जरूरी नहीं है कि हर सीन के ऊपर बहुत धड़म बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दें ताकि लोगों को समझ आ जाए कि क्या इमोशन. आई थिंक लोग इतने स्मार्ट होते हैं, उनको समझ आ जाती है. या आप उनको बताएं कि अब ये बंदा बुरा है, रोना नहीं आ रहा, लेकिन रोना तो है आपके, क्योंकि म्यूजिक देखें हमारा बैकग्राउंड में. हाँ, no, it doesn't dictate. It does not dictate at all. It allows you to feel, and you do feel, and you do feel. It's a very sort of emotional film. Absolutely. आपकी जिंदगी बदली है इसके बाद. You've come back with awards and recognition, and you know, great reviews. I think like unanimously good reviews. There haven't been any bad reviews. Standing ovation, and so much acclaim. You're back in town. Has your life changed in any way? No. I want to say yes. I know the right answer is yes. No. I want the real answer. Are people like investors like knocking at your door now? Okay. Are you planning for your next film? Sure. In that sense, no, I'm not planning for my next film. मुझे बहुत time लगता है film बनाने में. अच्छा. I think my process is very slow, and मुझे पसंद है जब अभी as of now मेरे पास 2-3 कहानियां हैं जो बहुत ही unformed nascent stage में हैं. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ जल्दी है कि मैं बनाऊं अगली film. Life has changed. I feel I have changed as a human being. Right. I think आपके अंदर जो एक थोड़ा जवानी का गुस्सा होता है, वो एक अपने आप को प्रूव करने का या वो करने का जो आप चाहते हैं करना, वो थोड़ा कम हो जाता है जब आप कर लेते हैं वो. So I think I've calmed down as a human being. I feel like an adult human being now. Okay. I can finally say I don't feel like a boy anymore. You know, young boy who can get away with things. Like I think I feel a bit more responsible as a human being. So that has changed. Pakistan में तो नहीं. Nobody has asked me to do anything. And I don't think they will. I knew that this will not happen. Because जब डार्लिंग भी हुई थी तब भी थोड़ा इस तरह से नहीं, but एक reasonable amount of शोर मचा था कि you know, young filmmaker, promising filmmaker, new filmmaker, ये वो, इनको चांस दें, ये करें वो करें. मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, हम चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं. अभी तो लाइन लगी होगी, वो तो सारे हम TVRY एयरपोर्ट पे आएंगे रिसीव करने के लिए. तो वो आज तक मैं वेट ही कर रहा हूँ उस कॉल का, वो नहीं आएगी. और वो अच्छी बात है, बिकॉज आई थिंक इट्स ग्रेट, बिकॉज एट दैट पॉइंट वो मेरे लिए लेसन बहुत अच्छा था. नॉट दैट आई वाज गोना डू एनीथिंग जो वो कर रहे हैं, बिकॉज वो उनका इंटरेस्ट डिफरेंट है, मेरा इंटरेस्ट डिफरेंट है. बट अगेन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपने अपनी जगह खुद ही बनानी है, और वो अगर आप खुद बना लें तो आई थिंक वो ज़्यादा उस जगह की सर्टेनिटी
और उस जगह की अपनाइत ज़्यादा होती है. Like अब now I feel कि हाँ, I am a part of this film industry. Yeah. And On your own terms and conditions. on my own terms. Yeah. मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे और लोग भी मेरे जैसे आ सकते हैं जो कि अपनी कहानी अपने तरीके से बताना चाहते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप वही करें जो आप देख रहे हैं. There are ways of doing other things, you know. Yeah. And I think that space, I feel like that वो थोड़ी सी शायद Joyland की वजह से, जो कि मेरी फिल्म नहीं है, वो बहुत से लोगों का काम है, उस वो जगह थोड़ी increase हुई है. For those people, the door is a bit more open, I think, after that, which I'm grateful for. And I think, I hope that that's not just a perception, that that's actually true. I mean, Sarmad is a producer on Joyland, and Sarmad's Kamli, I felt, has opened doors for a lot of different, like a different genre altogether. Absolutely. कोई सोच नहीं सकता था कि कमली जैसी फिल्म लोगों को पसंद आएगी या लोग देखेंगे या उनको समझ आएगी. Yeah. Because we're dumbing down content on television, so it's really it was a wow moment, I think, for cinema, for sure, right? And he's a producer on Joyland as well. I always knew that Kamli would do well. Okay, then. I always, because I edited it, and you edited it, yes, of and course. I always would tell him that this film will do well, this will do commercially well. Right. I could just tell that this is such a smart thing that aapne, again, the basic story is a love story. Yeah. 5 गाने भी हैं, उसमें गाता मसलम का गाना भी है, सवा कमर, you know, got the beautiful locations. ये सब आपने दे दिया है. Checklist is done. और अब आप लेकिन कहानी आप अपनी बताएंगे और अपनी तरीके से बताएंगे. So I thought that was a very smart move. Very smart. And I felt that, you know, this film can do well. So, but I say this to Sarmad as well, and I'm going to ask you the same question, कि आप लोग एक मुश्किल subjects उठाते हैं. I mean, even Kamli was about desire. It was about emotional deprivation. And so is Joyland to a certain extent. Yeah. It is about emotions, and it's about desires and human desires. आप लोग ये नहीं यार कोई आसान फिल्म नहीं बनाते, कोई फीचर फिल्म टाइप गाने शाने डाल के इंटेलिजेंट फीचर ट्रिलॉजी पूरी हो जाएगी. जिंदगी तमाशा जब रिलीज होगी, so because जिंदगी तमाशा is also a little bit about desire. And are you involved in that as well? No. Okay. No. I actually was B-roll unit के DP था मैं. Okay. Director था, DP था, पता नहीं क्या for Eid Milad-un-Nabi के दिन हमने कुछ shoot करने जाना, so just for 2 days. But no, I don't have involvement with जिंदगी तमाशा. But you know, Khusat Films Productions team, बिल्कुल ट्रिलॉजी हो जाएगी, तो मैंने कहा ये करते हैं. फिर हम सफर बनाते हैं, फिर वापस चलते हैं हम सब बनाने. आप जाएं वापस, हम सफर बनाएं. हाँ, कंपनी के अंदर पैसे आएंगे. But on a serious note, don't you think कि अच्छा कोई यार commercially अब rom-com या popcorn thriller बनाते हैं जो लोगों, because obviously you can make films, you do know how to tell a story, and that's the most important thing of a film. Yeah. To be able to tell an engaging story जो audience बैठ के, and you can of course execute as well. You've proven that. So, I mean, does that thought even cross your mind, or no, you're going to stick to what? No. Because I don't look at films as commercial and not commercial. Somehow, मेरे अंदर से वो definition side, मैं उनमें मेरा belief उनसे उठ चुका हुआ है. Because commercial film, या तो हम ऐसे कह रहे हैं जैसे हर commercial film hit होती है. या पाकिस्तान की हर कमर्शियल फिल्म जो कि कहती है कि हमारा हीरो होगा, हीरोइन होगी, 5 गाने होंगे, 5 सीन्स होंगे, क्या वो फिल्में चली हैं? नहीं. चला क्या है? कमली. So on that level, I'm like, actually commercial should just mean कि आपने इस फिल्म में X amount of money invest की थी और आपको उस पर profit हुआ है, right? और लोग देखने आए हैं और लोगों ने connect किया, लोगों को पसंद आई है वो फिल्म. वो कहानी कोई भी हो सकती है, you know. अब like I think even in India somehow, I don't know, South Asia के अंदर ये definitions अभी भी थोड़ी rigid हैं, लेकिन बहुत सारी फिल्म्स हैं. बधाई हो जैसी फिल्म अगर एक, again it's a family drama, becomes a huge hit. अंधाधुन, crazy weird thriller but also a comedy, becomes a huge Darlings, you know, it's on Netflix but everybody's watching it and raving about it. So what's commercial is actually a definition which is up for grabs. But if we start to believe that, तो फिर जो the big studios, what will they do? Yeah. So I think we kind of following their dictate of saying कि no, ये indie फिल्में वाले हैं, ये parallel. Actually, I think Joyland can do commercial numbers. I think so. I think if it plays and you do a you got a couple of songs as well. Exactly. And fun songs. So I'm like, ये फिल्म चल सकती है. I think ये फिल्म लोगों को पसंद आ सकती है. जिस तरह से you know, again, the lead actors are not big actors. That's fine, but there's a considerable amount of buzz that has been happening because of Khan and stuff. Of course. And if we promote it well enough, I think it could make money. Like actually make money. Yeah. So I would like to say my film is commercial, but I will say it hopefully, if I'm right, after the film is done. And instead of me trying to make something that I don't believe in, that has actually the same amount of chances of not working
that a parallel film does. You know, हर action film तो hit नहीं होती, ज़्यादातर floppy होती हैं, but everybody only wants to look at RRR और वो, which are the good ones, but they come once in 10 years. जो बाकी तब हम ये नहीं कहते कि action films are not working. When the 100 action films don't work, we don't say the action films are not commercial. We wait for the one that's going to work. So I think that's the same formula we should apply to parallel or indie films. We should wait for the one that works, like Company did work. I hope Joyland does too. और हम कहेंगे इंशाल्लाह कि ये commercially viable indie film है. A commercially viable festival film. Festival film है कि just because एक film festival पे गई doesn't mean कि वो लोग उसको देखने नहीं आएंगे. Festival पे robots तो नहीं बिठाए हुए थे, हम भी लोग ही थे ना. Of course. टिकट लेके आए थे वो भी. ये भी टिकट लेके hopefully I hope के जाएं. और जितने जाएं उनमें से percentage high हो जिनको पसंद आए. You know, let's see. Maybe so I'm young. So international audience, and I'm going back to the festival. समझ आ गई थी उनको? Did they get the dynamic of the independent, the Mujra culture and the... They had questions. They had questions. Some of them had questions. What were their questions? I'm very curious. Like, did any question surprise you? Like, they would ask me कि वो जो दूसरी जो red dress में जो खातून थी, वो तो खातून थी ना? अच्छा ठीक है. तो मैं कहता था हाँ आपको सही समझ आई. मतलब कि they would understand, but they would doubt themselves because they didn't know the culture. They didn't know the culture. Also, the film doesn't clarify too much. Yeah. कि ये ट्रांस वाली डांसर है इसलिए इसके साथ लोग इंटरवल में नहीं बैठ रहे. You're supposed to just watch it and you get it, it's fine. You know, रेड वाली तो बहुत ही भाई. तो उस तरह के 2-3 सवाल उनके शायद कुछ लोगों के होते थे, but largely I was pleasantly surprised that it worked. Yeah. Absolutely. मेरा तो उनकी प्रेगनेंसी को लेके जो सवाल था, I asked you. Because उनकी प्रेगनेंसी और ये हम नहीं बता सकते. ये हम नहीं बताएंगे, हाँ ये नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ. लेकिन एक वो सवाल कभी-कभी आता होता है. वो आता था ना. हाँ, but I don't think that's something to do with Pakistani audience और वो outside audience. वो I don't know, मुझे शायद as a filmmaker या as an editor एक थोड़ी सी kick मिलती थी कि people will wonder a little bit and that's fun. मुझे ऐसा लगता है कि as human beings we started questioning everything. We're now inherently suspicious of everybody, which is so sad. Because even the opening scene, जिसमें वो अपने पे चादर डाल के they're playing, and I was like, okay, do we have a pedophile in the house? I know. You know, and I was like, is this what the film is going to be about? So I think it's just so depressing that we have inherently become suspicious human beings. That's it. तो आपको हर एक पे शक होता है, हर एक पे आपको, but अब है जो है वो है. Somehow इस तरह की thinking जो है, I think it makes for a nice viewing experience for a film like Joyland. I think because it is about being suspicious of everyone. Everyone is suspicious of everyone else. कि तुम क्या कर रहे हो या ये कहाँ होता है रात को या ये क्या कर रही है. So I think it's true. It's unfortunate, but it's true. Yeah. Absolutely. So I'm coming back full circle. Release ka, what can we look forward to? I mean. So we can expect a release in November in Pakistan, inshallah. Right. Theatrically. Right. And then inshallah. And you'll make it for the Oscar deadline. We will make, inshallah. We'll make it for the Oscars. Inshallah, you know, inshallah. One never knows. It's going through the censors right now. You have made some cuts. We have made some cuts. Which will not the censors. I mean. And those cuts, let me just tell the public here, whoever's watching, will not interfere with the flow of the film at all. बिल्कुल भी नहीं. I think बिल्कुल भी नहीं. कुछ ज़बान की कुछ चीजें हैं जो शायद हम जिंदगी में बोलते हैं real life में, but वो सेंसर वाले अंकलों को नहीं अच्छी लगती. बिल्कुल. उन्होंने कहा ना रखें, हम क्या म्यूट कर देंगे. बिल्कुल. तो वो चीजें अभी हो रही हैं, but I don't think कि कोई problem होनी चाहिए overall. Like the overall film has passed. Right. I would like to say. Congratulations, Saim. It's such a huge achievement, and we're all so proud of you for telling these stories and for creating these characters. And I hope that all of Pakistan can watch and appreciate and walk out a little more tolerant and a little more empathetic, as you said. Absolutely, hopefully. Yeah. Absolutely. Thank you, Saim. Thank you so much, Amna.